Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for mathematics, class 3rd, chapter 2, fractions. This is our lecture number 8. Topics to be covered: exercise 2E, page 27. Now बेटा we will solve exercise 2E. अब हम exercise 2E solve करेंगे. Question number 3. Question number 3, add. Question 3 में आपको क्या करना है? Add करना है. Part A. In part A, given fractional numbers are 2/6 and 3/6. आपको 2/6 और 3/6 को क्या करना है? ऐड करना है. Okay, so here in place of and we will put plus sign here in solution. Solution में हम क्या लिखेंगे? 2/6 plus 3/6 equal to. Understood? Now beta, see here, denominators are same, okay, of both fractional numbers. दोनों fractional numbers के denominators क्या हैं? Same है. According to the rule beta, when denominators of two or more fractions are same, we add only numerator. हम सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं एंड द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. क्लियर? तो हम इसमें न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे. सो व्हाट विल वी राइट हियर? 2 plus 3/6 equal to 2 plus 3, 5/6. We will write here 5/6. This is our answer. Clear? Now we will solve part B. In part B, given fractional numbers are 1/10 and 2/10. Okay, हमने इनको क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है. So here we will do solution. यहाँ पर हम solution करेंगे. Okay, then in place of and we will put plus sign here. See, 1/10 plus 2/10 equal to. Okay, see here, denominators are same of this given fractional numbers. Here denominators are same. So beta, when denominator of two or more fractions are same, we add only the numerators and the denominators remain same. So we will add 1 and 2. So we will write here 1 plus 2/10. See, 1 plus 2/10 equal to 1 plus 2, 3, and denominator will remain same, 3/10. So we will write here 3/10. This is our answer. Okay, now we will solve part C. अब हम part C को solve करेंगे. Here in part C, given fractional numbers are 4/7 and 1/7. Okay, now we will solve it here. हम यहाँ पर solution करेंगे. Okay, so in place of and, first of all we will put plus sign here. Okay, see, 4/7 plus 1/7 equal to. See here,
Denominators are same. पार्ट सी में भी जो फ्रैक्शनल नंबर्स गिवन है उनके भी डिनोमिनेटर सेम है. ओके बेटा, सो व्हाट विल वी डू हियर? हम इसमें क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे. सो वी विल राइट हियर 4 प्लस 1 अपॉन 7. अब हम जब 4 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5. And the denominator will remain same. So what will we write here? 5 upon 7. This is our answer. Clear? Now beta, in exercise 2E, we will solve part D of question 3. हम part D question 3 का solve करेंगे. Question 3, add. Okay, given heading is add. Part D. In part D beta, given fractional numbers are 1 upon 5, comma 2 upon 5 and 1 upon 5. Clear? हमें बेटा पार्ट डी में इन गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करना है. ओके, so we will do solution here. Okay, you have to write solution here. Now we will solve it. Okay, first of all, in place of comma and we will put here plus sign. Okay, so what will we write here? 1 upon 5 plus 2 upon 5 plus 1 upon 5. Okay, equal to. See here, beta, denominators are same of this given fractional numbers. यहाँ पर denominators क्या हैं? Same है. बेटा, according to the rule, when denominators of two or more fractions are same, we add only numerators. And the denominator remains the same. तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे. So what will we write here? 1 plus 2 plus 1 upon 5, as denominator will remain same. Okay, let's start. 1 plus 2 plus 1 upon 5. Clear? Equal to 1 plus 2 3, 3 plus 1 4. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 upon 5. Denominator will remain same. So what will we write here? 4 upon 5. This is our answer. Clear beta? Now we will solve part E of question 3. Given fractional numbers are 1 upon 3, comma 7 upon 3 and 4 upon 3. हमें इनको क्या करना है बेटा? ऐड करना है. Let's do solution. You have to write solution here. Okay, now beta, in place of comma and we will put plus sign. Okay, see how will you put plus sign? 1 upon 3 plus 7 upon 3 plus 4 upon 3 equal to. Okay, see here beta, in this given fractional numbers, denominators are same. Okay, so what will we do? We will add numerator only. Okay, हम numerators को add कर देंगे and the denominator will remain same. So what will we write here? 1 plus 7 plus 4 upon 3. Okay, now we will add 1 plus 7 8, 8 plus 4 12. Okay, so we will write here 12 upon 3. Okay, and denominator will remain same. So we will write here
12 upon 3. This is our answer. Okay. Now we will solve part F. अब हम part F को solve करेंगे बेटा. In part F, given fractional numbers are 3 upon 8, 5 upon 8 and 7 upon 8. Okay, so we will solve this part here. We will write solution here. हम यहाँ पर solution लिखेंगे और इस part F को हम यहाँ पर solve करेंगे. Okay, so in place of comma and we will put plus sign. See, how will you put plus sign? 3 upon 8 plus 5 upon 8 plus 7 upon 8 equal to. Okay, see here beta, in this given fractional numbers denominators are same. तो हम क्या करेंगे? We will add numerators only. Okay, so we will write here 3 plus 5 plus 7 upon 8 equal to. Okay, 3 plus 5, 8, 8 plus 7, 15. So what will we write here? 15 upon 8. Denominator will remain same. Okay, so we will write here 15 upon 8. This is our answer. Clear? Understood everybody? Now beta, today's homework is do question 3, add part G 1 upon 2, 5 upon 2 and 9 upon 2. बेटा आपको होमवर्क में क्वेश्चन 3 ऐड, गिवन हेडिंग इज ऐड का पार्ट जी करना है. ओके बेटा, बी केयरफुल while doing these fractional number addition sums, as ma'am has already explained parts A to F. पहले मैम ने क्लास वर्क में पार्ट A to F आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. यू हैव टू फॉलो द रूल, देन यू हैव टू सॉल्व पार्ट G. Okay, part H 3 upon 4, 1 upon 4 and 5 upon 4. पार्ट जी में भी आपको बेटा इन गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करना है. ओके, पार्ट आई 2 upon 9, 4 upon 9 and 1 upon 9. आपने इन गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करना है. क्लियर बेटा? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एंड यू हैव टू सॉल्व दीज सम्स इन योर notebook. Okay, now beta we will discuss homework solutions which I had assigned in the previous lecture. Okay, let's start. Question 1, add the following. Part G. In part G beta, given fractional numbers are 2 upon 6 plus 3 upon 6 equal to. Okay, here box is given. आपने इन फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करना है और आंसर को कहाँ लिखना है? बॉक्स में. ओके, लेट्स स्टार्ट. बेटा सी हियर, denominators of both the fractional numbers are same. Okay, according to the rule, when denominators of two or more fractions
are same, we add only numerators and the denominators remain the same. ओके तो हम यहां पर सिर्फ न्यूमिरेटर को ऐड करेंगे. ओके सी 2 प्लस 3/6 इक्वल टू, जब हम 2 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. सो व्हाट विल बी राइट हियर 5/6 and this answer we have to write here in the box. Understood? Part H. In part H, given fractional numbers are 6/8 plus 1/8 plus 2/8 equal to, and here box is given. ओके इस बॉक्स में आपको क्या करना है, इस बॉक्स में आपको आंसर लिखना है. ओके सी हियर बेटा डिनोमिनेटर्स आर सेम ऑफ दिस गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स. ओके सो बेटा यू हैव टू ऐड ओनली न्यूमिरेटर, आपको न्यूमिरेटर्स ऐड करने हैं. सो वी विल डू दिस एडिशन हियर. ओके सो you have to write 6 plus 1 plus 2/8 equal to 6 plus 1 7, 7 plus 2 9. तो हमारा आंसर क्या आएगा 9/8. Denominator will remain same. We will write here 9/8 and we will write this answer here in this box. Clear? Now we will solve part I. अब हम part I solve करेंगे. In part I, given fractional numbers are 3/5 plus 2/5 equal to, and here box is given where you have to write answer. See here beta in part I, in the given fractional numbers denominators are same, so we will add only numerators. Okay, we will do solution here. हम यहाँ पर ऐड करके दिखाएंगे. We will write here 3 plus 2/5 equal to 3 plus 2 5. तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा 5/5. Denominator will remain same. We will write here 5/5. Now we will write this answer here in this box. Understood? Clear beta? Now beta, in homework solutions we will discuss question number 2 also, which I had assigned in the previous lecture. Okay, question number 2. Subtract the following. Part G. In part G, given fractional numbers are 8/12 minus 5/12 equal to, and here box is given जिसमें आपको आंसर लिखना है. Okay बेटा. Now beta, what will we do? We have to do now subtraction of fraction with the same denominators. Okay, when denominators of two or more fraction is same, we subtract only the numerators. Okay, हम सिर्फ numerators को subtract करते हैं and the denominators remain same. Clear beta? Let's do subtraction here. See, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 minus 5/12. See, 8 minus 5/12 equal to. Okay, हम
न्यूमिनेटर्स को माइनस करेंगे and the denominator will remain same. 8 minus 5 equal to 3. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3/12. We will write here 3/12. Okay. Now we have to write answer here in the box. 3/12. Understood? Now we will solve part H. In part H, given fractional numbers are 4/8 minus 1/8 equal to, and here box is given. इस box में आपको answer लिखना है. See here in these given fractional numbers, denominators are same. So we will subtract only numerators. Okay. Let's start. We will do subtraction here. अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 minus 1/8 equal to 4 minus 1 3/8. ये हमारा आंसर होगा. See 3/8. 4 minus 1 3. हम यहाँ 3 लिखेंगे upon 8. According to the rule, denominator will remain same. इस यहाँ पर upon 8 कर देंगे. Clear? And we will write this answer here in this box. इस box में हम answer लिख देंगे. Clear? Now we will solve part I. अब हम part I solve करेंगे. In part I, given fractional numbers are 3/5 minus 1/5 equal to, here box is given. इस box में आप क्या लिखोगे? Answer. Okay. See here, denominators are same of this given fractional numbers. So we will subtract only numerators. Okay. We will do subtraction here. See, 3 minus 1/5 equal to 3 minus 1 equal to 2. So our answer will be 2/5. Denominator will remain same. Okay. Answer is 2/5. Now we will write this answer here in this box. 2/5. Understood? Have you cross-checked? Very good. Thank you.